हेलो स्टूडेंट्स, इन अ प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेकोरेटर फंक्शन, है ना। और हमने देखा कि डेकोरेटर फंक्शन किस तरीके से हमें हेल्प कर रहा है फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए। और हमने उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात की कि आप जब वेब डेवलपमेंट जाएंगे फ्रेमवर्क में करते हैं तो कहीं ना कहीं वो डेकोरेटर्स आपको हेल्प करते हैं आपके रिमेनिंग फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। सो लेट बी फॉर दिस वीडियो लेट बी चेक इफ वी आर हैविंग द मल्टीपल डेकोरेटर्स विच इज डिफाइंड ओवर द सेम फंक्शन, ओवर द सेम एग्जिस्टिंग फंक्शन। तो किस तरीके से उसका फ्लो कंट्रोल पाइथन वर्चुअल मशीन में वर्क करेगा और उसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। तो इस वीडियो में हम डेकोरेटर चेनिंग पर बात करते हैं, है ना। तो लेट वी डिफाइन वन फंक्शन सिंपल। द फंक्शन नेम इज डिफाइन original. It's a original function which is defined, and just we will then what we need to do is simply writing here print this is the original function. Write the brackets. Original function. Now we want to define the multiple decorators over this, है ना. Suppose we have defined the decorator 1, that is decor. Suppose we have defined one more decorator, that is decor 1. लेकिन यदि हम इन दो डेकोरेटर्स को इसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए उन डेकोरेटर्स को लिखना पड़ेगा. सो दिस शुड बी डेकोर. जब हम उन डेकोरेटर्स को लिखेंगे तो उसका ऑर्डर जो है वी विल ट्राई टू मैनेज द ऑर्डर, है ना. सपोज अभी इसको हम डेकोरेटर 1 डेकोरेटर 2 करते हैं और क्लियर रहेगा आपके लिए, है ना. सो फर्स्टली वी डिफाइन द डेकोरेटर 1 और 1. डेकोर 1 में सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इनसाइड इट वी हैव टू पास द फंक्शन, क्योंकि ये जो फंक्शन है वही ओरिजिनल फंक्शन को पास कराएगा इसमें. फिर एक इनर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम हम देते हैं इनर 1. And in this inner one function we have to define, inner one function, and inside this inner function we just print the print decor 1 is decor 1. And what we need to do, we have to return inner. Fine. Similarly मैं एक और डेकोरेटर डिफाइन करता हूं जिसको हम बोलते हैं सेकंड डेकोरेटर, है ना. दैट इज अ डेकोर 2. व्हाट आई नीड टू डू, सिंपली मैंने डेकोरेटर 1 डिफाइन करा और डेकोरेटर 2 डिफाइन करा, है ना. तो डेकोरेटर 2 क्या प्रिंट कर रहा है, डेकोर 2 है ना. सो लेट बी अंडरस्टूड द सिचुएशन कि किस तरीके से पाइथन वर्चुअल मशीन यहाँ पर काम कर रही है. सो व्हाट इज हियर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन दिस ओरिजिनल फंक्शन is called, suppose this original function is called, so what is happening here is the decorator 2, है ना. Instead of decorator function 2 we are having first decorator 2. So what is happening, this decor function will go to this func only. Okay, when this decor func will be called, this func will reach to this inner 2 definition, and this inner will be written by this decor 2 function, and this inner will be passed as a function to this decor 1, है ना, as we already discussed in the previous videos. So this inner one will be executed. So this inner, it should be inner 1 instead of inner only for the proper execution. It should be inner 1 and it should be inner 2. So this inner one will be written by this decor 1, and finally for this original, this decor 1 will be executed, है ना. So with this
there should be output for the decor one. So let me run this code. Okay, so decor one is not defined. It should be decor. I think should be decor decor two, or it should be decor one. Spelling mistake is there. So when I run this code, can you see this inner one is written here and original is here. Print two. Just a minute. Decor one and decor two. So in a decor two, we are having this passed. Inner two is written here. This inner two is passed in the function, and finally this inner one is executed, and this inner one is returned here. Okay. So when I call this original, when I run this code, so can you see the output is this is decor one. So this is what the flow control that you need to understand during the decorator chaining. Instead of this, if I'm changing the order of this, suppose there's a decor 2 and there's a decor 1. So when I run this code, see the output is this is decor 1 instead of, just a minute, it has to be executed again. This is decor 2 instead of decor 1, क्योंकि पहले नंबर पर हमारे पास जो @decor 1 आ रहा है, नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास क्या आ रहा है, decor 2. सो इट्स वेरी क्लियर, इट शुड बी वेरी क्लियर कि भाई ओरिजिनल जो है मेरा इसका रेफरेंस पहले डेकोर 1 में जा रहा है, जो फंक्शन में मिल रहा है वो इनर 1 को कर रहा है, इनर 1 रिटर्न हो रहा है, वो जा रहा है हमारा फंग में, यहाँ पर डेकोर 2 में. फाइनली इनर 2 एग्जीक्यूट हो रहा है. इनर 2 होने पर जो इनर 2 है वो ओरिजिनल को रिटर्न हो रहा है. व्हेन ओरिजिनल गेट एग्जीक्यूटेड द डेकोर 2 विल बी executed. So output is this one. Let me take some numerical kind of functions so the thing will be more clear to you all, है ना. हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हमें और क्लियर होगा, है ना. लेट मी डिफाइन टू फंक्शंस. सबसे पहले नंबर में एक सिंपल फंक्शन डिफाइन करता हूं. सपोज डिफाइन डेटा, एंड व्हाट इज हैपनिंग, दिस डेटा फंक्शन इज डूइंग नथिंग. इट्स रिटर्निंग वन वैल्यू टू यू. सपोज इट इज रिटर्निंग return, that is suppose 32, whatever may be the value here. And for this returning function I want to define some functionality with two functions, है ना. तो मैं एक decor define कर रहा हूँ यहाँ पर. वो decor function क्या कर रहा है, इस function को as a input ले रहा है. When I define the inner function in this decor, what is happening inside this inner function? This inner function calling this function for returning value of this data, and it is returning nothing. It's a returning the value xy2 simply. So this is what your decor function. अब मैं इसके लिए एक और डेकोरेटर फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ. That is, let I take this code here. This is your decor 1. And what is happening? This is the inner function. आप inner का नाम सेम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो अंडर द लोकल स्कोप है ना. And here it is returning the value. Suppose I import one module, that is math module. और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं रिटर्न करा रहा हूँ वैल्यू इसकी x फ्लोर डिवीजन math.sqrt in bracket, it should be x. Fine. So what it is returning? It is returning a square root value division of this x. Now what I'm doing the decorator chaining here, and let me see the expected output here. So first I call @decor, then I call @decor1. So this is @decor and this is @decor1. So can you see when I run this code,
and call the data here. So none type object is not callable. Okay. So what is happening here? Return is 32 inner. Yes. We are returning the value here, but we are not returning the inners here. है ना? तो रिटर्न करना पड़ेगा हमें इनर को, जो हम मेथड देखते आ रहे हैं हमेशा, क्योंकि डेकोर फंक्शन जो है वो इनर के थ्रू ही फंक्शनैलिटी अचीव कर रहा है हमारी। यहाँ पर भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा इनर को। I run this code again. Can you see the output is 4? अब हम इसको इसका कंट्रोल फ्लो देखते हैं, किस तरीके से पाइथन वर्चुअल मशीन जो है हमारी मूव करी है, और आपके लिए ये जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आ रहा है ना। सो लेट मी चेक इट। देखिए व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले नंबर, जैसे ही डेटा फंक्शन कॉल होता है आपका, इस डेटा फंक्शन की जो डेटा है आपका, वो सबसे पहले डेकोर को पास होता है। सो वेयर इज डेकोर? दिस फंक। सो नाउ दिस फंक इज हैविंग अ डेटा राइट नाउ। When this inner function is goes inside it, before execution of this inner is returned to the decor one as per the order of execution of just a minute. So here the function is what? Inner. When this function get execution, inside this inner execution, this x func is nothing, this inner is there. So when this inner is executed, this x is equal to func is called. Right now this func is what? Data. तो जब इस डेटा को मैं कॉल करता हूं तो यहां पर x की जो वैल्यू है दैट इज 32। ठीक है। जब ये फंक्शन x रिटर्न कर रहा है तो ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है आपकी, वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है 16। अब हम जो स्टैक ऑर्डर में देखें, जो हमारा रिकर्सिवली जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो वो क्या करेगा? अपनी इस x की वैल्यू को इस फंक्शन कॉल पर जो यहाँ पर दिया हुआ था वहां पर रिटर्न करेगा, है ना। अब जो वैल्यू है x की यहाँ पर कितनी मिल रही है आपको? 16 मिल रही है ना। सो व्हेन दिस फंक्शन विल रिटर्न, दिस विल रिटर्न द 16 floor value of 4. So the exact output is 4. So this is what the way, or this is what the flow of execution for the decorator chaining, है ना। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन कि डेकोरेटर चेनिंग हम किस तरीके से करके कंप्लीट जो कंट्रोल है हमारा उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं।